Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSIR-NET and the GATE mathematics. Today I will explain you the another lecture on the integral equations, that is how you can find the resolvent kernel of the degenerate one. As usual, I will explain you with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR UGC NET. You can see I had uploaded the various lectures. All I have explained with the help of the shortcut tricks. बच्चों मेरा दावा है अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को अच्छे से सुन लोगे आपका गेट नेट 101% क्वालिफाइड होगा। मेरी गारंटी अगर आपने अच्छे से लेक्चर और अच्छी टेक्निक्स के साथ ये मेरे सारे लेक्चर सुने और प्रैक्टिस करी तो आपका 101% नेट और गेट क्वालिफाइड हो जाएगा। आपको कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है। नाउ what is the objective of this lecture? We will see how you can find the resolvent kernel of the Fredholm equations. So this is the equation of the Fredholm. Make sure that the integrations, that is a and b, are my finite constant values. Fine. If fx is my 0, then we can call as the homogeneous integral equations. If fx is my non-zero, then we call as the non-homogeneous Fredholm equations. And the value of this k, is known as the kernel. And as we have discussed in our previous lectures, this kernel is divided into the two categories. One is called as the non-separated and second is called as the separated form that I have mentioned this. Separated form, non-separated form. What is the meaning? Separated form is also known as degenerated form. Fine. What is the difference between them? You can see these examples. First of all, can you write this kernel into the product of the two functions? One is the function dependent on the x only. Second function is the dependent on the t only. क्या आप इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हो? पहला पार्ट में सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, दूसरे में फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। बिल्कुल लिख सकते हो आप। दिस इज e raised to power x, दिस इज e raised to power minus of t. देखिए ये फंक्शन आपका अकेला x का है और ये अकेला t का है। Similarly, you can see about the second. I can write as a x and this is a t square. Clearly say this is a function of the x only, this is a function of t square, t only. Again, this is the function of the x and this is the function of the t. On the other hand, क्या आप इस वाले पार्ट को इस तरह से लिख सकते हो कि ये फंक्शन अकेला x का हो एंड दिस फंक्शन अकेला t का हो? आप कभी नहीं लिख सकते। फाइन। इसी तरह से आप इसको भी कभी नहीं लिख सकते ये फंक्शन ऑफ x हो अकेला और ये फंक्शन ऑफ t हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं डीजेनरेट सेपरेबल फॉर्म। और अगर आप इसको फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ t ओनली। और इस केस में आप रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड करते थे आप? हाउ यू कैन फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द टाइप 1? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस lecture. You can watch this lecture in this playlist. You can see this is a Fredholm. You can see these are the various lecture related to the integral equations. और एक बार किसी स्टूडेंट ने कहा भी था सर आप इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए इंटीग्रल इक्वेशन की, तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है PY क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशंस. You can see each years 25, 24, 23 all are available in this playlist. तो आप इस लेक्चर को प्लेलिस्ट को सुनिए, पूरी इंटीग्रल इक्वेशंस के ऊपर प्लेलिस्ट है. बट मेक श्योर स्टूडेंट यू हैव टू लाइक एंड कमेंट ऑन दी वीडियो एज वेल. और इस केस में क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने? जो भी आपका कर्नल है इस फ्रेडहोल्म इक्वेशन के लिए आप इसका रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे निकाल सकते हो? यू कैन सिंपली राइट द कर्नल दैट इज a kx, t divided by 1 minus lambda into integration of a to b. For more detail आप इस वाले प्लेलिस्ट को सुनिए फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस. आप देखिए फुली शॉर्टकट ट्रिक्स है, 26 मिनट्स की वीडियो है, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है. और हर ईयर में नेट हो चाहे गेट हो, हर ईयर में टाइप 1 और टाइप 2 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना है. चलिए, इन दिस लेक्चर वी विल सी हाउ यू कैन फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द डीजेनरेट फॉर्म. एक बार अगर आपने रिजॉल्वेंट कर्नल किसी का निकाल लिया, इसको अगर मैं RK से लिख रहा हूं, हाउ यू कैन फाइंड, वी विल सी. एक बार अगर आपने रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल लिया, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इज we can replace the value of the kernel with the help of the resolvent kernel and the value of the y is replaced by f of
t, make sure this is f of t. क्वेश्चन ये उठता है कि रिजोल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे। फाइन, वेरी इजी। आप सिर्फ 5 मिनट मेरे को दीजिए, वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप हर क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। पहले 5 मिनट अभी आपको कॉपी पे मत लिखिए, सिर्फ समझिए एंड देन यू कैन सी हाउ यू कैन फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको हमेशा मैट्रिक्स ए निकालनी है। फाइन, अगर आपको याद हो ऑल दीज प्रीवियस लेक्चर विच आर अवेलेबल इन माय प्लेलिस्ट, इस लेक्चर में भी मैं मैट्रिक्स ए लिखता था, ax इज इक्वल टू बी। ओके, और इसके लिए भी अगर अगर आपको याद हो, मैं इस मैट्रिक्स को कैसे लिख देता था, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 एंड सो ऑन। और किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये मेरे से याद नहीं हो रहा, कैसे मैं इसको एफ आई और जी आई फाई आई कैसे याद करेंगे। तो डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, हमेशा हमेशा अवेलेबल हूं। मैं इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आया हूं आपके लिए, हाउ यू राइट द मैट्रिक्स ए। फाइन, तो आप क्या करना, इस वीडियो से जो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो से मैट्रिक्स ए को लर्न करिए कैसे लिखना है, अगेन विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। आई विल टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक्स हाउ यू कैन राइट द मैट्रिक्स ए, और उसके बाद आप इन वीडियोस में जैसे मैट्रिक्स ए लिख लिया, मैट्रिक्स ए को आज की वीडियो के हिसाब से लिखिए, और बाकी तो आपके पास इन 5 वीडियोस में ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइन, मैं फिर कह रहा हूं, हाउ यू कैन राइट द मैट्रिक्स ए with the help of the fully shortcut tricks you can watch in this lecture as well. Fine, चाहे आप इन लेक्चर्स में भी मैट्रिक्स ए को लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप आज वाले लेक्चर से मैट्रिक्स ए को लिखना सीखिए। चलिए, सब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैट्रिक्स लिखना। फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल, तो कर्नल की वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखिए इस वन को। फाइन, सबसे पहले मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। फाइन, अगर मान लो मैंने ये एग्जांपल ले ली, प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, जो भी प्लस के पहले लिखा हुआ है या माइनस के पहले लिखा हुआ है, इसको आप दो पार्ट्स में लिखिए, एक्स में अलग लिख दीजिए और टी वाला अलग लिख दीजिए। सिमिलरली इस वाले पार्ट में भी एक्स वाला अलग लिख लीजिए, टी वाला अलग लिख लीजिए। समझ में आ गया? फाइन, अब यही चीज मैं इसके लिए करता हूं। इस वाले के लिए पहले मैट्रिक्स का साइज लिखते हैं। ये कितनी टर्म्स है आपकी, दो टर्म्स है 1 एंड 2, तो इसका साइज होगा 2 क्रॉस 2। इस 1 को आप लिखिए 1 1। फाइन, 3xt को आप लिखिए 3x और t वाले को अलग लिख लीजिए। फाइन, समझ में आ गया? अब जो ये पहली वैल्यू है, मैं एक बार बच्चों मैं कह रहा हूं अभी लिखो मत कॉपी पे, सिर्फ ये मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको 2 मिनट में ये मैट्रिक्स लिखना बता रहा हूं, उसके बाद आप अपना आंसर 15 सेकंड में निकाल लेना सेल्फ। यही था ना? पहली वैल्यू कैसी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेशन करिए 0 से 1 में। फाइन, तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन करिए 0 से 1, तो आंसर हो गया आपका 1। सेकेंड वैल्यू, जो ये सेकेंड वैल्यू है, ये कैसे आएगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट करिए जो भी लिमिट्स है आपके पास 0 से 1। इसका इंटीग्रेट करोगे 3x का 0 से 1, तो कितना हो गया आपका आंसर 3/2। थर्ड आंसर 1 2, अब इधर लिखना है, इसके लिए इधर चलिए आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को x में ही रखना आपको, जैसे 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर हो गया, इसके इंटीग्रेट करिए 0 से 1, तो आपका आंसर हो गया 1। और फाइनल आंसर इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x, सब कुछ x में ही लिखना है बेसिकली आपको, तो ये x है, 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर हो गया हाँ। समझ में आ गया? दोबारा समझा रहा हूं मैं, एक बार दोबारा समझिए। फाइन, जो भी ये आपके 4 नंबर हैं 1 2 3 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वो आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से मूव करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर हो जाएगा, और फाइनली इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 4th हो जाएगा। मतलब आपको ये जिगजैग बनाना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दोबारा पूछ रहा हूं। ओके फाइन, नाउ अब जैसे ये समझ में आ गया, आपका आंसर खत्म हो गया। फाइन, अब आप इसका आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ट्वेस प्लस डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट विल बी 1 minus 3/4, that is a 1/4. so therefore रिजोल्वेंट कर्नल कितना होगा, पहला जो भी आंसर दिया हुआ है कर्नल 1 plus 3x into t माइनस वैल्यू ऑफ द लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है आपको, इससे लैम्डा
बच्चों एक बार समझने में देर लगेगी आपको, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपको। फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, अभी लिखना यहां से स्टार्ट करना है। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू नेगेटिव की, फिर 1, इस तरह से मूव करना है आपको। प्लस माइनस प्लस माइनस, +1, और लास्ट वैल्यू आपकी है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, -3/2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? बस अब आप लिखो फिर से उसी तरह से, 1 × 1 = 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3xt, और इधर करेंगे तो ये आपका हो गया फाइन, डिवाइडेड बाय, रिजॉल्व डिवाइडेड बाय दिस नंबर। फाइन। अब मैं अगर इस चीज को डी ऑफ लैम्डा का नाम दे रहा हूं, फाइन, तो आपका आंसर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर डी ऑफ 1/, और इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी आसान कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल रूट्स निकालना है, तो इसको लैम्डा 1 -2 लैम्डा प्लस 1/4 लैम्डा स्क्वायर। एक और चीज देखिए, अगर आपके पास a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स आपके पास अल्फा एंड बीटा है, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा? तो आप क्या कैसे लिखते हो इस इक्वेशन से? लिख सकते हो ना, पहले c से स्टार्ट करेंगे, फिर देन b एंड देन a। तो यही मैंने लिखा है, a b एंड c, पहले लैम्डा स्क्वायर 1 -2 लैम्डा 1/4 लैम्डा, एंड दिस इज द रिजॉल्वेंट कर्नल। जो भी अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, आप करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट्स 1 + 3xt minus 3x/2 minus 3t/2 divided by 1 - 2 lambda plus 1/4 lambda square is the answer of the problem। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके दिया है, अब अगले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं क्विकली, देखते हैं कितना सेकंड लगेगा आपको। चलिए, x², पहले तो दो टर्म्स है आपके पास, तो इट इज अ 2 × 2, इसको सेपरेट लिख लेते हैं, इट्स a x², इट्स a t, then it's a minus of x, it is a t square। Is it okay? Now the integration is from 0 to 1, multiply करिए x³, integration from 0 to 1, it's a 1/4, fine, then it's a minus of t square, so it's a -1/3, it is x³, always written as x, is a -x³ means -1/4, and the last number is x4 is 1/5, so therefore आपकी इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 एंड डिटर्मिनेंट इज -1/16 प्लस 1/15, so that will be 1/15, so therefore resolvent kernel will be, जो इक्वेशन है आपके पास, x² minus xt² minus lambda, start from this first value positive, second value negative, third value positive, and fourth value negative, minus minus plus 1/3. So start from this x², t, then minus of tx, minus minus plus, then minus of t², so its number is negative, minus t²x, and this number is positive, that is x² t², divided by 1 plus 1/15 into lambda square is the required resolvent kernel of this problem। ओके, अगला चलते हैं। a is my 2 × 2, so it is a x, पहली टर्म x है, इसके साथ t का कंपोनेंट 1, x will be 1 and t will be minus of 2t। Write the first integration from 0 to 1, x की integration half, fine, 1 integration of 1 is 1, fine, integration of minus of 2x or 2t is a t²/2, it's a -1, and the last part is minus of 2x², integration of the -2x² is -2/3। Is it fine? Now can you write equation lambda square trace half of lambda and determinant is -half plus 2/3, so that number is 1/6, fine, so therefore resolvent kernel is my
given equations of the kernel minus lambda times, start करते हैं यहाँ से, -1 into first term plus negative minus plus 2/3 into the second plus minus plus half into माइनस, लिखना वही है, ऑलवेज जिगजैग फॉर्म, फाइन, प्लस माइनस स्टार्ट यहां से करना है आपको, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस माइनस प्लस 2tx डिवाइडेड बाय इक्वेशन बदल दीजिए आप, प्लस λ/2 प्लस λ²/6। और अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना चाहते हैं देन इट विल बी माइनस ऑफ लैम्डा, you can see this is the 2/3 positive plus 2x t is positive, it's a minus x, it's a minus of t divided by equation is the right answer। ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, make sure once we will open the CSIR-NET gate and the other year's paper, they have asked you find the resolvent kernel। Okay, look at this another one. Now you can see this is not the degenerate kernel. Now you can see this is a simple one. This is the k of x and this is the k of t. This is not a degenerate form. So how you can find the resolvent kernel? That will be kxt minus lambda times integration from a to b of kxx. Fine. So can you find the value of the kxx? From 0 to 2 pi sin x cos x, fine, and by using the orthogonal property this is my 0। तो अगर आप यहाँ पे fill करोगे so that will be my sin x into cos of t and this is 1 minus 0। So the resolvent kernel is only my same function, that is a sin x cos of t is the resolvent kernel, fine। Now look at this another one. Again, now this is again degenerate form. So I can write this number is 4x and t for the minus x square and it is 1. So integrations are from 0 to 1. So can you do the first integration? 4x square. 4x square integration of the 4x square from 0 to 1. So it is a x cube by 3. So that is a 4/3. Then it is x cube minus 1/4, x square minus 1/3, 4x, x square over 2, that is my 2. Is it okay? Then you can write the equation, trace will be my 1 and the determinant will be 4/9 and minus minus plus 1/2. Is it okay? 4/9 4/9 minus minus plus 2/, fine. So is it okay? So then how you can write the equations? It is 18 is the LCM, 8 plus 9 is 17, 17/18 is 0. So therefore resolvent kernel is the given equations of the kernel 4xt minus x square minus lambda, start from this number, so positive value and multiply by this, so minus 4xt divided by 3 plus minus of 2 into minus of tx square, so minus minus plus 2x square into t plus minus plus into 4x square divided by 3 and it's a minus 1/4, that's a minus minus plus 1/4 and multiply by 4x, so that number will be my x divided by equation, you can change them, it's a 1 minus lambda plus 17/18 lambda square is the right answer of the problem. Now you can see they are talking about the solve. Now how you can solve the problem? Again, your first target is to find the resolvent kernel. So I can tell you the solution is y of x, which is 1 plus integration from 1 to 0. This is the kernel. Now you can see in this case kernel will be 1 plus
e raised to power x plus t, I can replace the kernel with the help of the resolvent kernel into f of t. Fine. ये इसका solution है. What is the f? This is my f of t. Is it okay? Now you can see if you compare them, lambda is my 1. Anyhow, so can you write the matrix? Now you can see 1, 1, e raised to power x, e raised to power t. So can you write the first number integration from 0 to 1? So that number is 1. Integration of the e of x from 0 to 1, e minus 1. Integration of e raised to power 2x, it is e square minus 1 over 2. And this is the first part. Second term, third term, and the fourth term, e minus 1. So therefore lambda square minus trace, so trace will be 2 1 plus e square over 2, and the determinant will be e square minus 1 over 2 and e minus 1 whole square, a square plus b square minus 2ab. So if you solve them, it is minus 3 minus of 2, that is a minus e square, plus 4e divided by 2. 4e minus e square minus, fine. So therefore you can find the resolvent kernel is the kernel plus x plus t minus lambda. What is the value of the lambda is 1 into, so let me clear this. So you can start from this first number, e square minus 1 over 2 into 1 negative e minus 1 of e raised to power x, positive 1 into e raised to power x into e raised to power t, and negative e minus 1 of e raised to power t. Fine. Now what is the value of the f of t? It is my 1. Fine. Now you can integrate this divided by this number. But in this case lambda is my 1, so you can substitute the value of the lambda is 1. So that number is 1 plus e square over 2 plus and so on. Clear? Now you can integrate 1, integrate with respect to t. So all these quantities are my constant. This is my constant. This is my constant. This is value is x. This is the integration of the x. And after the solving, you will get the right answer of the problem. हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में नहीं आएगा, बट दैट इज अ प्रोसीजर. ओके, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल x प्लस टी. फाइन. देखिए बच्चों, इस लेक्चर का मेन पर्पस है कि आपको इस मैट्रिक्स ए को बड़े आसान तरीके से बताना पहले. फाइन. आप देखो, इसके बाद मैं आपके लिए ये देखिए नेट गेट के सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए. फाइन. तो लेकिन सबसे पहले टारगेट है इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए आसानी से. नाउ 0 से 1 इंटीग्रेट करिए क्विकली से. एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन 1. इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स इज हाफ and integration of the x square is x cube by 3. So you can find the characteristics equation, lambda square trace and determinant 1 over 4 minus 1 over 3 minus 1 over 12. So your resolvent kernel is given value of the kernel. This is my kernel minus lambda. Lambda is my here. Start from this number half into the first number, that is x, so x by 2. Second number is negative 1 by 3 multiply 1, so it's a minus 1 over 3 plus half into t, so plus t over 2 and minus 1 into x t divided by 1 minus lambda minus half lambda square. फाइन. और अगर आपको कहीं पे पूछ लिया जाए रिजॉल्वेंट कर्नल एट द वैल्यू ऑफ द 1, 2, 1 इज माय x, 2 इज माय t, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर. चलिए एक और करते हैं. अगेन 2x माइनस t है. यू कैन राइट द फर्स्टली मैट्रिक्स. सो दिस इज 2x 1. ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं? बिकॉज इसका अंदर t का कॉम्पोनेंट कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया. इसके अंदर x का कंपोनेंट कुछ नहीं है, वो 1 हो गया आपका. सो 1 माइनस ऑफ t.
सो अगेन इंटीग्रेट करना है 0 से 1. सो फर्स्टली इंटीग्रेट करिए से 0 से 1, इट इज 1. इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, 1. Integrate from 0 to 1 is my minus half, and integrate is minus 2x square, so minus 2 over 3. So lambda square, trace is my plus half, and the determinant is minus plus 2 over 3, so that is plus 1 over 6. Resolvent kernel is my given equations, 2x minus of t minus lambda. What is the value of the lambda? Is 1 into, start from this number is a positive, into first part, so 2x into minus half minus x, minus minus plus 2 over 3 into 1, plus minus plus, plus 1 into minus of t, minus 1 into minus minus plus 2x t, divided by 1 minus half, because lambda is my 1. फाइन, अदरवाइज ये इक्वेशन ये बननी थी ना आपकी, प्लस लैम्डा स्क्वायर. अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हाफ है, लैम्डा इज 1, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज माय 1. फाइन. अब आपको सोल्यूशन पूछा है, तो सोल्यूशन क्या होगा? g ऑफ x विल बी x ओवर 6 प्लस इंटीग्रेशन. अब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x minus t, if you open them, plus x minus 2 over 3 plus of t minus 2x t divided by, ये इसका जो भी आएगा, half plus 1 over 6, so that is a 4 over 6. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है आपको. तो ये पहली टर्म तो आपकी कांस्टेंट हो गई, फाइन. 6 over 4 आउटसाइड हो गया आपका. ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन 2x के साथ 2 रह गया. t की इंटीग्रेशन हाफ हो गई, x का इज अ कांस्टेंट तो 1 हो गया आपका. 2/3 इज अ कांस्टेंट, तो आउटसाइड हो गया. t की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इज माई हाफ हो गया. 2x t की इंटीग्रेशन मेरी x हो गई. So now you can solve that. That is my x and x cancel. So answer will be x over 6 plus 3 over 2, 2x minus 2 over 3. और आप solve कर लीजिए, and that will be the required solution of this problem. चलिए, this is an exercise for you. मैं आपको मैट्रिक्स A लिख के दिखा देता हूँ. ओके, उसके बाद आप रिजॉल्वेंट कर्नल बताइए कमेंट में कि आप इसको लिख सकते हो कि नहीं. ये x होगा और एक t होगा. दिस इज माई रूट x एंड रूट ऑफ t. इंटीग्रेशन 0 से 1 है. x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, दिस इज x रेज़ टू पावर 3/2. x की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन 0 से 1 करनी है, तो 5/2, सो दैट इज अ 2 over 5. दिस इज माई x की इंटीग्रेशन हाफ, दिस इज 5/2, सो दिस इज माई 2 over 5. बाकी आई थिंक आप सेल्फ कर सकते हैं. चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं CSIR-NET एग्जामिनेशंस के सारे. फाइन. चलिए, शो दैट द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो रियल आइगन वैल्यू. पहले तो इसका कर्नल ही देख लो क्या आपका, t रूट x माइनस x रूट ऑफ t. तो आप इसको लिखते हैं पहले x की वैल्यू एंड देन t की वैल्यू, फिर x की वैल्यू माइनस x हो गया, और ये रूट t. 0 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है और मैट्रिक्स A निकालनी है. चलिए, ये कितना हो गया, x की पावर 3/2, सो दैट इज 5/2 एंड 2 over 5 आपका फर्स्ट आंसर हो गया. माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 over 3, माइनस x की पावर 3/2, सो दैट इज माई माइनस 2 over 5. और इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का आंसर हाफ. तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस विल बी 0 एंड डिटर्मिनेंट विल बी माइनस 4 over 25 प्लस 1 over 6. सो कितना हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 25, 1 over 25 into 6, so that is plus 1 over 150 is 0. So clearly से अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालो तो कितनी आएगी, माइनस 1 over 50 आयोटा. अब आयोटा की वजह से ये क्या आपका इमेजिनरी नंबर, सो दैट मीन्स इट हैज नो रियल आइगन वैल्यू. चलिए, अब आप सॉल्व करते हैं सेकंड.
CSIR-NET जून के क्वेश्चन है, इसको पहले थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। फाई ऑफ एक्स कितना हो गया, लैम्डा, जीरो से माइनस वाले को उधर राइट साइड पे लेके जाओ, तो इसका कर्नल कितना हो गया आपके पास 3x माइनस ऑफ 2 इंटू टी। अब ये तो डीजेनरेट कर्नल नहीं है बिकॉज ये तो फंक्शन x का हो गया, तो इसका रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे निकालोगे आप, कर्नल पूरा पहले लिख दो सेम, फाइन, माइनस 1 minus lambda integrations from 0 to 1 of kxx, kxx कितना हो गया 3x minus 2 into x, फाइन। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करूं 3x स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम 0 से 1, तो ये कितना आंसर आया x क्यूब बाई 3 दैट इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 दैट इज माई 0, यही आंसर आ रहा है। 1 minus 1 is 0, so that means ये नंबर 0 हो गया आपका, तो रिजॉल्वेंट कर्नल विल बी 3x minus 2 into t divided by 1. Sorry, this is a 1 over 3. X square, integration of the x square is 1 over 3. So this is completely changed. Fine. So I can write the equation is lambda square. The trace will be 1 over 3, 2 over 3, so 1 lambda. Fine, and determinant will be 2 over 9 minus 1 over 4. So 36 is the LCM, 8 minus 9. So minus 1 over 36. Or I can write the equation is 1 minus lambda square. Okay, fine. Or I can multiply by minus 36 minus, fine. So the equation will be minus b plus minus b square minus 4 into 36 divided by 2. So clearly say both the eigenvalues are different because your quantity b square minus 4ac is my positive. Fine. So therefore it's a minus of 18. So this number is cancelled. It's a fine. And since both the eigenvalues are my distinct, so the corresponding eigenfunctions f1 and f2 are orthogonal to each other. So once they are orthogonal, dot product is 0 or integration is my 0. A and D are the right answer. मैं इसलिए कह रहा हूं, you can watch about my these playlist. Find PY question of the integral equations deep. चलिए look at this. Now you can see it's a June 2023. Now you can see I can solve this question with the help of the 15 second. Lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues for the following homogeneous. So can you find the eigenvalues? So it will be plus minus half of this length. Fine. Again, it's a cos positive. So can you find the eigenvalues? It is plus minus 1 over half of this positive. Fine. Now there are the two eigenvalues. One number is lambda 2 is a greater than. So that means lambda 1 is my minus 1 over pi and lambda 2 is my plus 1 over pi. Similarly, for this case, mu1 is less than of mu2. So mu1 is my minus 2 over pi and mu2 is my plus 2 over pi. Then you can find the relations. अब नहीं मेरे को लगता कुछ बचा इसमें. सबसे छोटा क्या है इसमें? mu1. mu1 is less than of lambda 1. Then lambda 1 is less than of lambda 2 and it is less than of lambda mu2. First option correct, second option wrong. What is the mu1 minus lambda 1? It is 1 over pi. What is the mu2 minus lambda 2? So 2 minus 1 is again. So both are same. So C option is the correct, D option is the wrong. A and C are the right answers. And let me know how many seconds you are needed to solve this 2023 solutions. Okay, look at this another one. MH set 2023. First of all, you can see these are not a constant. This is not a constant. So basically, this is not the Fredholm equations. This is basically the Volta equations. Fine. And how you can solve the Volta equations? You can see my this lecture, Volta equation solutions. Fine. And Volta equation solutions. So how you can solve them? So clearly say I can solve the equation with the help of the Laplace. So let's start with this. Laplace of the x. What is the Laplace of the t?
1 over s square. This is the convolution. Fine. So because we are working independent variable is t, so Laplace of the minus t into Laplace of x. Fine. So I can take Laplace of the x on the right hand side. It is 1. What is the Laplace of the t? It's a minus 1 over s square. So this number is plus 1 over s square, which is 1 over. So can you find the Laplace of the x? It will be 1 over s square plus 1. So can you find the value of the x? Laplace inverse 1 over s square plus 1, and which is nothing but my sine of t is the right answer of this problem. Okay, look at this another one. The eigenvalues of the function 1 minus 3 of tx. सबसे पहले इसको x और t में फॉर्म कर लेते हैं. This is the ds. So I can replace s to be the t, and wherever the t is written, I can replace by x. So this number will be 1 minus, this is x into t. Fine. Now you can write the matrix. फिर वही रूल चल जाएगा ना आपका, 1 1 minus 3x t. Integrations are from 0 to 1. Integration of 1 is 1. Integration of the 3x is minus 3 over 2. Integration of this number is my minus 1. Integration of this number is my half. So eigenvalues are lambda square minus of 0 lambda minus 1 plus 3 over 4. That number is minus 1 over 4. So therefore lambda square minus 1 over 4 is 0, or you can say eigenvalues are plus minus half, but you can find the eigenvalue of the given is reciprocal eigenvalues. So eigenvalues are my plus minus 2. So plus minus 2 is the right answer. Or you can write the equations 1. Fine. So clearly say lambda is my plus minus 2 is the right answer. Okay, lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues. Phi 1 and phi 2 are the corresponding eigenfunctions of the separable kernels kxt. Which of the following is not true? Okay, since lambda 1 is not equal to lambda 2, that means they are my distinct eigenvalues. Once they are distinct eigenvalues, that means the corresponding functions phi 1 and phi 2 are my orthogonal. Once they are orthogonal, that means the integration will be 0. So this statement is my correct statement. Once they are orthogonal to each other, that means the phi 1 and phi 2 are my linearly independent. That statement is also correct statement. Fine. Once they are linearly independent, that means they are not dependent. So that statement is my false statement. The Fredholm determinants, that is a D. D is the same as I define the capital A. Whatever the value we have, because we never know what is a K, that because the roots of this is my lambda 1 and lambda 2. So therefore, the value of the A corresponding to this lambda will definitely be 0, because lambda 1 and lambda 2 are the roots. So therefore, this number is also correct statement. So the right answer is only C is my right answer of this problem. For the Fredholm integral equations with the separable kernel, whatever the K, the Fredholm determinant equations is non-zero. That means whatever the matrix we have obtained, fine, and that determinant is my non-zero. What does the meaning of that? This means the value of the lambda 1 and lambda 2 are not the root of the equations. Once they are not the root of the equations, that means, what does the meaning? That means the solution is always unique. फाइन. एक और टिप्स बता देता हूं. जब भी आपकी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स A is not equal to the given lambda, then we always get the unique solutions. And whenever the eigenvalues of the A are equal to the eigenvalues, then we have either the no solutions or the unique solution, or the infinitely many solutions. कहाँ से डिटेल ले सकते हो? Solutions of the Fredholm equations. You can watch about this lecture, Fredholm equation solutions.
फाइन, यहां से आपको इस लेक्चर का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो अब आप क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट इज अ नॉन जीरो, दैट मीन्स दे आर नॉट द रूट, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज यूनिक। फाइन, अब यूनिक सोल्यूशन वेदर इज अ जीरो or a non-zero. Zero only once it is a homogeneous, and non-zero means when it is a non-homogeneous. But clearly say what is the fx. This is the general equations. Find kernel into what is the value of the f. Clearly say this number is my zero. That means the given integral equation is my homogeneous. Once it is a homogeneous, it has always the unique zero solution. So in no solution, infinitely already cancel. Fine, because the determinant is a non-zero. So the right answer is A is my correct answer of the problem. Okay, can you solve all, can you find the resolvent kernel of all these 5 problems? You can try to solve it and let me know in the comment box whether can you thank you to me that yes, अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो और अगर आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप इन सभी के आंसर क्विकली से निकाल पाओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल। We will see the next lectures, more detailed solutions, no solution, infinite solution and the various cases. Till then, you can share this video with your friends. Best of luck, students. Happy learning always. Best wishes.